congruence of triangles is our topic, what we are doing, and we are doing congruence of triangles in this exercise on we are going to prove two triangles congruent by AAS rule, that stands for angle angle side rule. एंगल एंगल साइड रूल बेसिकली अगर टू एंगल्स ट्राइंगल में इक्वल है तो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है कि ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। अगर ऑल थ्री एंगल्स इक्वल है और एक साइड इक्वल है देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स they are equal in all their respects, they are equal in all the respects. If we overlap them they will be overlapped with each other. That means that. So we have to prove the triangles congruent by AAS rule. AAS rule stands for angle angle side, and if two angles are equal to each other in the triangle, then the third angle will also be equal, because sum of all the angles of a triangle is 180 degree. Okay. Now, let's see the first question. Identify the triangles which are congruent. Give reason in support of your answer. आपको ये बताना है if these two triangles are congruent to each other, and you have to support your answer with the we give reasons in support of your answer. Okay. So these two triangles 4.8, this side is equal to this side, right? And we want two other angles to be equal to each other. This is 30 degree. And if we find the third angle, this is the angle in triangle. First question, in triangle DEF, angle D plus angle E plus angle F is equal to 180 degree, because sum of all the angles, angle sum property. This is called angle sum property of triangle. Okay. So angle D you have to find out. E is given to be 90 and F is given to be 30 degree is equal to 180 degree. Angle D plus 120 degree is equal to 180 degree. That means angle D is equal to 60 degree. If this is 60 degree and this is 60 degree, मतलब ये दोनों angles same हो गए, and the third angle also equal to each other. ये 30 degree है, this is 30 degree and this is also 30 degree. So what to identify the triangles which are congruent, give reasons to support your answer. You just have to give the reasons also in support of your answer. So वन का हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF. ABC is congruent to DFE basically. So let's rub it. ये DFE ही लिखते हैं हम, जिससे congruent है वो DFE. ओके, क्योंकि ABC के इक्वल क्या है DFE, क्योंकि ये तो दोनों एंगल्स एंगल A is equal to एंगल D, एंगल B is equal to एंगल F, तो सेम प्लेसेस पे आना चाहिए. AB is equal to DF, तो ये सेम प्लेसेस पर है. So that is correct. Now angle A
is equal to angle D is equal to 60 degree. And what about the side? Including side is AB equal to DF. AB is equal to DF. It is given to be equal. And the third part is angle B is equal to angle F is equal to 30 degree. So if three parts, मतलब ये आपके पास आ गया angle, two angles, angle, side. So you can write it like this, 1, 2, 3. Okay. और ये आपको, आप इसको ASA रूल से भी प्रूव कर सकते हैं. It is up to you. या आप triangle ABC congruent to triangle DFE by AAS rule or ASA rule. ASA rule says angle, side, angle rule. इसमें इंक्लूडिंग साइड होगी, तो ये इंक्लूडिंग साइड भी है और AAS भी यूज कर सकते हैं. अगर आप 1 2 3 यूज करें तो AAS यूज कर सकते हैं, और 1 2 3 यूज करें ऐसे, तो इसमें क्या यूज हो रहा है? ASA रूल. तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एंड वी हैव प्रूव्ड दिस कि फर्स्ट पार्ट इज कॉन्ग्रुएंट बाय AAS. बेसिकली हम ये प्रूव कर रहे हैं एंगल साइड एंगल से. व्हाट वी आर प्रूविंग थ्रू एंगल साइड एंगल, और वी कैन प्रूव इट बाय AAS रूल आल्सो, बट दिस कैन बी यूज्ड एंड इंक्लूडिंग साइड होती है इसमें. सो जस्ट सी हियर, इसमें भी इंक्लूडिंग साइड है और टू एंगल्स हैं. ये देखिए इसमें है 45 is equal to 45 degree. Let's mark them with different colors. ये common है. And third angle is, so what are the triangles congruent to each other? Triangle DQ, Q के साथ हमारे पास है यहाँ पर QRS, ले लेते हैं इसको. QRS congruent to QRS, Q के इक्वल S है, तो SRQ, okay, SRQ. What about this triangle, these two triangles? TU is common to YZ, and angle this 40 degree is equal to this 40 degree. And what about the third one? This is 70 degree and this is also 70 degree. So triangles कौन से congruent है? It's very simple now. TUV triangle TUV congruent to triangle. T के साथ क्या है? 40 डिग्री है T, तो YZX. Have you understood, students? It's very simple to do it. You just have to visualize the things. Things in the joining figure. AB and PQ intersect each other at O. And this is perpendicular. So this is 90 and this is also 90 degree. AO is equal to OB. That means this side is given to be equal to this side, okay? And is AP is equal to BQ.
AP is equal to BQ. देखिए ये vertically opposite angles नहीं हो जाएंगे. These two are vertically opposite angles. So these two triangles are congruent. First of all, let us prove the triangles to be congruent to each other. The second question says, in triangle A AOP and triangle AOP के इक्वल क्या है? BOQ एंगल O या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख लेते हैं. Angle 1 is equal to angle 2 vertically opposite angles. Now AO is equal to BO. क्यों given है ये? The third thing is angle A is equal to angle B. क्यों? Because AO AP perpendicular on AB, BQ perpendicular on AB. तो each 90 डिग्री है, 90 डिग्री के इक्वल है ये दोनों ट्राइंगल. तो आपके पास आ गया ट्राइंगल AOP congruent to triangle BOQ. आपके पास ये आ गया और उसके बाद AP is equal to BQ. AP is equal to BQ by CPCT. देखिए AP सेम प्लेस पे और BQ सेम प्लेस पे. AP is equal to BQ by CPCT, that is congruent parts of congruent triangles. That says congruent part of congruent triangles. Third question. Third question says in the figure AD is the bisector of angle A. That means this angle is equal to this angle such that AD is perpendicular. ये perpendicular है तो we get this angle is equal to this angle, and you know that this side you can see it is common to it in both the triangles. So in triangle ADB and triangle ADC, you get angle 1 is equal to angle 2 because AD is bisector of angle A. ये दोनों ट्राइंगल्स हैं क्यों कॉन्ग्रुएंट? बाय ASA रूल, एंगल साइड एंगल, इंक्लूडिंग साइड है इसमें भी इंक्लूडिंग साइड है. एज यू कैन सी AD is bisector of angle A. Next, AD is equal to AD common. थर्ड पार्ट इज ये देखिए 90 डिग्री है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों? बिकॉज AD परपेंडिकुलर ऑन BC. ओके, सो ट्राइंगल ADB congruent to triangle ADC by ASA rule. So you have supported. Is triangle ABC isosceles? Isosceles के लिए AB is equal to AC शो करना है आपको.
तो can you see AB is equal to AC by CPCT? AB is equal to AC by CPCT. So triangle ABC, अगर two sides equal आ गई, is an isosceles triangle. These questions are very simple. You just have to visualize the three parts. किस चीज से आप congruent prove कर रहे हैं? देखिए AX bisects ये इन दोनों triangles को bisect कर रहा है. That means angle 1 is equal to angle 2. Angle 3 is equal to angle 4. So you will write AX bisects AD is the bisector. Okay, AX bisects angle BAD and angle BCD. That means angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4. ये 1 आ गया, ये 2 आ गया. So in triangle, कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे? पहले हम BAC and ट्राइंगल BAC कंसीडर किया, फिर हम कंसीडर करते हैं DAC. अगर सेम पार्ट्स को कंसीडर करना है DAC. So we already know angle 1 is equal to angle 2 by 1. ये AC और AC कॉमन है. You can see AC and AC is common here. AC is equal to AC common. Angle 3 is equal to angle 4 by 2. So triangle BAC congruent to triangle DAC by ASA rule. ASA rule. एंड ये आपने 3 कंडीशंस बता दी है. BC इज इक्वल टू DC आपने शो करना है. BC इज इक्वल टू DC. देखिए BC किसकी इक्वल है? देखिए सेम पार्ट पे आ रहा है BCDC by CPCT. That's it. You are done with this exercise. We proceed with RHS exercise in the next class. So thanks for watching the video.